हाँ, एक बार देख लेना आप। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? फाइन। चलिए, सो shall we start? Any query from the last class? Okay, कल आप भी absent थे, right? See, this is what I said in the very first class, beginning class. It's good if you have been one or two off, you taken one or two off, but be try to be punctual, nahi? And regular. It is very important. See, the topic, what the subject we are doing now, every topic of the syllabus of UPSC is interconnected. Now the time has come, or the time you can say that demands that interlinking of the subject has to be studied. Is it clear? So try to be regular, right? So please try to be regular. And one more request I have been received, that the class should be bilingual. This is what I have asked for the suggestion in the very first class. ठीक है, तो क्लास हम बाइलिंगुअल कर लेंगे, और कहीं भी अगर ऐसा है जो समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग. Do not hesitate in asking anything in the class. My job is to satisfy your concern. If I am not in a position to make you understand that anything which I am teaching, that is not good. That is not a good from my part. I will try my best to clear your doubts also. But it will only happen when you will asking those doubts in the class. If I am knowing the doubt that you have certain problems, you can ask. Feel free. There is no need to get hesitations. ठीक है? तो start करें. So in the last class, today's one problem has occurred. The thing, I have forgot my pen drive. So that would be done on the board. So in the last class, we are discussing the world order, and we have seen that the world order phases from the starting. It has divided into 4 phases, right? और हमने 3 phases discuss कर लिए थे class में, right? The last phase which was left, that is fourth phase. Is visible? Visible? Or should I change the ink? Do you want me to change the ink, or it is visible? Yellow कर लो. चलिए. So the 4th phase, now it is good. The 4th phase will be starting from the post Cold War period. ठीक है? So we have seen how the Cold War is described, how it is functions, or Cold War and Hot War is both simultaneously going on. ठीक है? Cold War where there is no war, right? That's why it is known as a Cold War. And Hot War because there is an ideological war between the two superpower, America and USSR. इन दोनों के बीच में क्या आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही थी, कैपिटलिज्म और कम्युनलिज्म के बीच में, राइट? सबको ये दोनों सुपर पावर क्या कर रही थी, वर्ल्ड ऑर्डर में जितने भी कंट्रीज हैं वो अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी. दैट्स व्हाई द वियतनाम वॉर वाज हैपन. नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ inclination of the North Vietnam towards the communism. That's why the American has interrupted or interfere in the functioning of Vietnam War. Clear? Now the 4th phase, the last phase, that is post Cold War period. The time period is from 1991 onwards, right? Now this is the period disintegration of USSR, right? तो ये पीरियड कौन सा है आपका? Disintegration of USSR, right? Then advent of the LPG. Do you know the LPG?
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये पीरियड था जब ग्लोबलाइजेशन हो रही थी, राइट। एलपीजी, दिस एलपीजी इज नॉट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, राइट। ये एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का पीरियड था। Then again there was a change in social order in 2019 when there was an occurrence of COVID. कोविड के बाद से वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज होना शुरू हो गया। कोविड के बाद इंडिया का रोल वर्ल्ड ऑर्डर में इंपॉर्टेंस रोल एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की तरह चलने आया है, इंडिया जानने लगा, राइट। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द कोविड इंडिया वाज अ कंट्री हु डेवलप्ड द वैक्सीन, transported the vaccine to the, exported the vaccine to the whole of the world, medicine, medical related to that, right? So during the COVID, the medicine which was used, that is also been transported, right? It started manufacturing in a huge amount of the medical equipments, right? So the next phase under this is COVID-19, and during this period, COVID-19 period, the India came to be known as an pharmacy of the world. ठीक है। अब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएस, रीजन क्या था यूएसएस के टूटने का, यूएसएसआर के टूटने का? देयर वाज रीजन, द मेन रीजन, दैट इज द आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर ने कम्युनिज्म को अपनाया, राइट, एंड अलोंग विद द रसिया, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री ज्वाइन द यूएसएसआर। जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएस आपका यूरोप है, दैट हैज ज्वाइंड द यूएसएसआर, एंड देन आफ्टर अलोंग विद दिस द ईस्ट ऑफ द यूरोप club together known as an USSR. They believe in a communalism, whereas the western part of the Europe believes in capitalism. western part किस पे बिलीव कर रही थी? पूंजीवाद था, कैपिटलिज्म था, राइट। और ईस्टर्न पार्ट जो यूएसएसआर का पार्ट था वो बिलीव कर रही थी कम्युनलिज्म पे, राइट। कम्युनलिज्म पार्ट में सारा पावर किसके पास हो गया? रसिया के पास, बीइंग द सुपर पावर। हमने देखा था आपका लंदन कॉन्फ्रेंस, पेरिस कॉन्फ्रेंस, राइट, जिसके थ्रू रसिया को एक ह्यूज अमाउंट ऑफ टेरिटरीज का गेन हुआ फ्रॉम द यूरोप, जिसको लेकर के उसने यूएसएसआर बनाया। तो सारा कंट्रोल किसके पास चला गया? रसिया के पास। जितने ईस्टर्न कंट्री, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री थे जो पार्ट थे यूएसएसआर के, वो सभी गवर्न होने लगे रसिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस, और रसिया उसमें सुप्रीम लीडर बना। The Russia has constrained their freedom, and due to the communism principle, they lack in a capital formations also. They lack in development also because they believes in communalism, a closed economy. What is a difference between capitalism and communalism? आपको पता है? कैपिटलिज्म और कम्युनलिज्म दो थ्योरी है ना, इकोनॉमी में शायद पढ़ा हुआ आपने। क्या है कैपिटलिज्म? हम किसे कहते हैं? वन बाय वन। इंडिविजुअल्स। कैपिटलिज्म इज बेसिकली पूंजीवाद इंडिविजुअल को बढ़ावा दे रहा है, प्राइवेट ओनरशिप, राइट। ठीक है, तो कैपिटलिज्म, यस, कैपिटलिज्म मीन्स वेयर द प्राइवेट प्लेयर्स, वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए कंट्री इज कंट्रोल्ड बाय द मार्केट, कंट्रोल बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट प्लेयर। जो देश का जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जो भी प्रोडक्शंस कर रही है, वो किसके हाथ में है? पूंजीवाद के हाथ में है। जिनके पास पैसा है वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है उसमें। दिस इज कैपिटलिज्म, राइट, दैट वाज adorned by the western European nations and along with the USA also. ठीक है, what is communalism? अच्छा, can you answer this? India follows which type of economy? That's a mixed economy, but principle of, on what principle it follows? नहीं,
कैपिटल इंडिया फॉलोज अ कैपिटलिज्म इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट है इंडिया, डेमोक्रेटिक इकोनॉमी, डेमोक्रेटिक इकोनॉमी, राइट। तो कॉम्युनलिज्म का पार्ट, द कॉमन, व्हाट इज कॉम्युनलिज्म देन? अगर हम आप कैपिटलिज्म की बात करते हैं, की बात करें अगर, तो यहां पर जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है आपके और मैन्युफैक्चरिंग है, इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? दे आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है। तो जितने भी प्रोडक्शंस होंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगा कंट्री में, दैट ऑल वेयर कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट प्लेयर्स, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज लेस और नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ठीक है। Whereas on the other hand, communalism is a theory where all the means of production and manufacturing is controlled by government, controlled by government, मतलब जितने भी प्रोडक्शंस, मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस और मैन्युफैक्चरिंग है, सभी का नेशनलाइजेशन है, सभी किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, प्राइवेट प्लेयर्स अलाउड नहीं है। एग्जांपल, आप रिसेंट एग्जांपल अगर देखना चाहें तो टिल 2000 वाज चाइना, अभी उसने प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया, बट टिल इट वाज चाइना हु फॉलोज द कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी, रसिया समहाउ आल्सो, नॉर्थ कोरिया, टोटली नॉर्थ कोरिया। इन करंट सिचुएशन अगर हम एग्जांपल कम्युनिज्म का देखें कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं कंट्री में, जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो सभी कंट्रोल कौन कर रहा है? उसमें किसके अंडर में है? गवर्नमेंट के अंडर में, राइट। तो रसिया इज फॉलोइंग दिस पॉलिसी, so the disadvantage of this policy is that a lack of capital, a lack of fund, कि गवर्नमेंट जितना बनाएगी बेचेगी उतना ही वो जनरेट करेगी इकोनॉमी, एक्स्ट्रा प्राइवेट प्लेयर्स अगर इन्वॉल्व नहीं है तो वहां फंड नहीं आएगा, फंड की क्रंच हो जाएगी, राइट। एंड ड्यू टू दिस रीजन द रसिया फॉलो द कम्युनलिज्म, the USSR lacks in development, फंड नहीं है तो डेवलपमेंट कैसे होगा? डेवलपमेंट के लिए फंड चाहिए, यस और नो, राइट। तो फंड है ही नहीं, उनके पास फंड था ही नहीं, क्योंकि कोई भी प्राइवेट प्लेयर्स अलाउड नहीं थे, तो उनके पास फंड, डेवलपमेंट। सेकंड थिंग, दिस इज द फर्स्ट व्हाई, सो दे लैक इन द डेवलपमेंट। Second, they lack in sovereignty. They do not have a sovereign nature of the state, because all were decided, the rule which has been decided by the Russia has to follow the everyone, right? These two reasons, this underdevelopment and sovereignty, lack of sovereignty, tempted the USSR countries to disintegrate. जब भी ईस्ट इंडिया, there was a term known as an iron curtain, आयरन कर्टन, कर्टन पता है आपको? पर्दे को बोलते हैं हम कर्टन, नहीं? तो आयरन कर्टन एक टर्म है जो यूएस प्रेसिडेंट ने दिया था। वो टर्म क्या था कि देयर इज एन आयरन कर्टन बिटवीन द वेस्ट यूरोप एंड ईस्ट यूरोप, क्योंकि वेस्ट यूरोप में डेवलपमेंट हो रही थी ड्यू टू द कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, गरीबी नहीं थी, एम्प्लॉयमेंट था, पैसा था उनके पास, so they are keep on developing. Similarly, beyond the curtain there was East Europe where there is no development, no fund, nothing. So the नाम याद नहीं है, अमेरिकन प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट, क्लियर? And whenever the Eastern European nation member visit to the Western European, they see the clear differences, and that instigate in the disintegration of USSR. This is clear? So this is the reason why the USSR has been disintegrated in 1991. Clear?
एनी डाउट? समझ में आ गया? So if you move to the next, so this we have done. Then along with the, as the disintegration of USSR has been done, the advent of LPG, the new era of LPG was started, liberalizations, privatization and globalization started. FDI's inflows, FDI's on India ने भी उसी समय LPG start किया था अपने globalization के liberalization process, if you remember, right? Then the capital formation was started, and then the development was done throughout the world. As soon as the USSR was disintegrated, जैसे USSR disintegrate होती है, जो disintegration से पहले वर्ल्ड ऑर्डर क्या था? बाइपोलर था, पावर दो पोल में डिवाइड थी, यूएसए और यूएसएसआर, रसिया हम जिसे कहते हैं, राइट? लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, एज सुन एज द यूएसएसआर गेट डिसइंटीग्रेटेड, द वर्ल्ड बिकम एन यूनिपोलर. यूनिपोलर मीन्स पावर शिफ्ट कहां हो गई? अमेरिका के पास. अमेरिका अगेन बिकम अ सुपर पावर, right? This was continued. Currently we are living in a multipolar world. Currently it is not an unipolar, it is a multipolar. अमेरिका भी सुपर पावर हो रहा है, चाइना भी, यूरोप भी हो रहा है, राइट? एशियाज भी आ रहा है आगे, बिकम अ सुपर पावर. इज दिस क्लियर? And then the situation changed in 2019 when the COVID was, sorry, a liberalization, privatizations, globalizations. Liberalizations, लिबरल हो गई कंट्री, एक दूसरे आना जाना, प्राइवेट होने लगी, और ग्लोबल वसुदेव कुटुंबकम के प्रिंसिपल पर आ गई कंट्री. Every country is the world is a home of every country. Anyone can do business anywhere. World order. See, as soon as the COVID-19 advent, the role of WHO was expected to play an important role, which is formed to prevent such disease. And the stakeholder of the WHO is major stakeholder was with the USA, right? Being a developed nation, it has affected more than the India. The India is expected to affected the largest in the world, because having a huge populations, having a huge number of poor living, population density is more in the India than in the USA. But India, Europe, America, Europe get more devastated than the India. And at the same time, India has played a role to provide medicinal help. To not only it tackle the spread of the COVID, but the WHO has appreciated and taken the steps which was taken by the India to tackle the spread of COVID, and it has suggested to follow that steps, right? तो फार्मेसी, वर्ल्ड ऑर्डर में फार्मेसी शिपमेंट एक्सपोर्ट बढ़ गया इंडिया का, right? Not only India has exported the pharmacy during the COVID, but it has also provided the food grains to the poor nations, which was not done by the Americas and Europe. They are fighting with their own cause. वर्ल्ड बोल सकते हैं, हाँ, इट हैज ओनली पावर, इट इज ओनली पावर. सारा पावर कंसंट्रेट के पास हो गया था, क्योंकि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने देखा यूरोपियन पावर, दो दे आर ब्रिटेन, फ्रांस विक्टोरियस, बट दे आर नॉट इन दे आर इन एन इकोनॉमिक कंस्ट्रेन. अब ऐसा नहीं, अब मल्टीपोलर हो गया. पहले देखिए डिफरेंस समझते हैं कैसे है. जब अमेरिका सुपर पावर था तो वो किस ईरान पे सैंक्शन लगाता था, अफगानिस्तान पे सैंक्शन लगाया उसने वेस्ट एशिया पे सैंक्शन लगाया, राइट? एज सुन एज द एलपीजी हैज इंट्रोड्यूस, लिबरलाइजेशन हैज डन, द capital formation has entered into the least developed nation of the southern part of the world. There is a divide, north and south divide, ठीक है?
तो साउथ में जब पैसा पहुंचता है तो लेबर इंटेंसिव वर्क, कैपिटल फॉर्मेशंस, industries were shifted towards those developing nations, so they become in a position to negotiate with them. So negotiating power weak हुई, so still it has a you can say that at the top of the power, but it has weakened. ठीक है, anything more? So this is the phases where we have started the understanding of a world order. Clear? Now we will see the next foreign policy, the theorem of foreign policy. So what is foreign policy? When we have started our class yesterday, we have discussed the national interest. Right? So what are the national interest? Every nation in this world has its own national interest. Yes or no? Right? And national interest comprises of security, prosperity, self-growth or status. It comprises with security, and security means both internal and external. Then it includes prosperity, that is economic well-being, FDI, flows of FDI, investment coming into the right into the country. Investment is done in the country. Formations of capital formations or expenditure formations आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में, right? What is capital formations? Capital formations, infrastructure form road, rail, airport, seaports, ये सब कैपिटल फॉर्मेशन है ना, जो लॉन्ग टाइम में रन होंगी. इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोवाइडिंग जॉब्स. दिस हैज सिक्योर द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ ए नेशन. यानी किसी भी कंट्री का अपने यहाँ प्रॉस्पेरिटी, उनका हाई डिमांड है, दैट आई शुड गेन समथिंग फ्रॉम दिस रिलेशंस. यस और नो, राइट? एंड द last one is self growth, that is status. And status means gaining and place in a political order of the world, recognition in the political order. This is a status. That's why India trying to get a seat in United Nations Security Council. Why it has its importance? अभी आप अगर आज का न्यूज पढ़ें तो again the China has blocked to recognize a terrorist by the UN because of veto power used by the China. It means that China has a major role in deciding this. So this is a status, a self growth, recognition in political. अभी एशिया में वर्ल्ड ओवर अगर आप बात करें, यूरोप और अमेरिका की बात करें, तो चाइना प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल इन एशिया. चाइना हैज आल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंप्रूविंग द रिलेशंस ऑफ अरेबियन नेशंस एंड इराक एंड ईरान एंड इजराइल. मेडिएशंस कराया अभी इनके बीच में, सऊदी अरेबिया और इनके बीच में. दे हैव इंप्रूव्ड देयर रिलेशंस. चाइना इज मेकिंग BRO. BRI, do you know the BRI? Belt Road Initiatives, String of Pearls. जो पहले कॉटन सिल्क रूट जाना जाता था, एंशियंट पीरियड में एक सिल्क रूट होती थी फ्रॉम द चाइना कवरिंग टू इंडिया, हिंदू कुश से होते हुए
सेंट्रल एशिया से बाई रोड द ट्रेड वाज डन, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, दिस इज ऑल्सो नोन एज सिल्क रूट। आप एंशिएंट में पढ़ेंगे इसे जब आप हिंदूकुश का फॉर्मेशंस पढ़ेंगे। This is done. The second they are doing, the China is also establishing a pearl of string of pearls, means gaining positions in the Indian Oceans. इंडियन ओशन, श्रीलंका को देखिए वहां पर बनाया उसने, इंडोनेशिया से पोर्ट बनाया, फिर पाकिस्तान के साथ पोर्ट बना रहा है। yes, and because of its natural resources, India has also started gaining its position in world order जब से इंडिया के पास लिथियम के रिसोर्सेस मिले हैं। Because the coming year is a time for an electronic vehicles and lithium is an very important part of making a batteries. आप जो फोन में बैटरीज देखते हैं, किसी भी आपके घड़ी वॉच के सेल में होगा, राइट, दैट इज मेड ऑफ लिथियम। पहले कैथोड रे से बनते, पहले दैट अर्लियर अगर आपने पहले पुराना टॉर्च देखा हो, दैट सेल वाज मच फैटर एंड बिगर। So this is a natural resource, one of the reason through which gave a power to the any nations to negotiate in the world order. जब से अरेबियन नेशंस में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का डिस्कवरी हुआ, दे हैव स्टार्टेड डेवलपिंग। दुबई ने डेवलपमेंट क्यों की? अरे सऊदी अरेबिया ने डेवलपमेंट कैसे हुआ? कतर में डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? आप ऑयल्स, अगर ऑयल नहीं होता तो उनके यहाँ डेवलपमेंट नहीं होता। नो वन इज गोइंग टू डील विद देम। गेटिंग माय पॉइंट? So this is the reason how any nations can develop its status, a growth. Status means having a power to negotiate with the country. जैसे आप एग्जांपल लीजिए, श्रीलंका, इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका, it is a recent development after the COVID, yes or no? Do you think that after the economic crisis of Sri Lanka is in positions to negotiate with the other nations? श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई, उसके बाद क्या श्रीलंका किसी के साथ नेगोशिएट कर पाएगा? नहीं। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन द रोल प्लेड बाय द चाइना इज ए डेट ट्रैप। डेट ट्रैप, पैसे उधार पे देता है, उससे पैसा नहीं चाहिए, वो वहां का एरिया खरीद लेता है या पोर्ट डेवलपमेंट या वहां पर इन्वेस्टमेंट करके उसको अपना बनाता है। द सिमिलर केस वाज विद द पीओके, right, where China was developing a road over there. Are you getting my point? So once the positions of any nations decides, that helps in negotiating, establishing its status. So this is a national interest, and these national interest helps to make plans. In the backdrop of these national interests, every nations make plans, policies, and to how to gain these goals and desires of the nations. That is known as a foreign policy. समझ में आ रहा है? फॉरेन पॉलिसी का मकसद क्या है? टू अचीव इट्स गोल्स, डिजायर्स। और गोल्स और डिजायर्स क्या है किसी भी नेशन का? नेशनल इंटरेस्ट, इट मींस सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी ऑल्सो, एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑल्सो, राइट। देन प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक वेलबिंग, पैसा है, यहां पर डेवलपमेंट हो। यस और नो? आप एक एग्जांपल की तरह समझिए, एक डेवलप्ड नेशन है और एक डेवलपिंग नेशन या अंडर डेवलप्ड नेशन, वो डिपेंड किसके ऊपर है? डेवलप्ड नेशन फॉर द फंड, फॉर द इकोनॉमी। Can the underdeveloped nation is in a position to negotiate with the developed one? नहीं. So it means it is losing its status. It has no negotiating power in the world order. तो उसकी होम करेंसी जो होगी वो डोमेस्टिक करेंसी
बहुत डिप्रेशिएट करेगी. Yes or no? Are you getting my point? That's why India is focusing on strong, making strong domestic currency as a strong in the international market. तभी देखिए इंडिया के बहुत सारे आज स्टेटस में इंडिया हमने डिस्कस किया था, जहां इंडिया अदर नेशंस, डिफरेंट नेशंस के साथ क्या कर रही है, करेंसी स्वैप. आरबीआई के गवर्नर जो है वो दूसरे स्टेट्स या नेशंस के सेंट्रल बैंक के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं टू अ करेंसी स्वैप, कि पेमेंट आपके यहां से हम अपने रुपीज में करेंगे, आप अपने में करेंगे. यानी डॉलर, इट मींस दैट द डॉलर विल लूज इट्स होल्ड इन द नेशनल मार्केट. It will establish the status of India in the world order. Yes, many countries has agreed on that. Russia भी agreed हो चुकी है. There is going on this debate. Are you getting my point? Right? So these are the objectives, or we can say that these are the goals of any nations, right? National interest. Now to achieve these interests, the nations have a backdrop of their interest, and then they formulate any laws or policies to interact with the other nations, because we know that in today's world, not even in the today's world but in the ancient time also, no state or individual can live in an alienation. कोई भी अकेला तो नहीं रह सकता. इंटरडिपेंडेंस तो है. हमारे पास ऑयल नहीं है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है, तो ऐसा तो नहीं कि हम गाड़ी नहीं चलाएंगे या ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी या चीज डेवलपमेंट नहीं होगी. फॉर दैट वी नीड टू डिपेंड ऑन दोस नेशन और स्टेट. It means there is an interdependence, and this interdependence needs to keep a relations with the other nations, but this relation should be on the backdrop of the national interest. Yes or no? Right? Now if we see the foreign policy, it has been made with the two term, that is foreign and policy. So what is foreign? Other, you can say that any sovereign land which is not a part of the other individual state, that is foreign, right? So foreign means any sovereign land not part of one's territory. This is foreign, right? Policy means a plan, a guide to interact with that foreign nations, to deal with that foreign nation, to negotiate with that foreign nation. This is policy. And the policy of any nation has been made in a backdrop of national interest. उसे हम ध्यान में रखेंगे और वैसा ही हम अपना डील करेंगे कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट जो है वो भी बनी रहे. यस और नो? समझ में आ रहा है? राइट? तो पॉलिसी इज वी कैन से दैट अ प्लान और अ गाइड और फॉर्मूला टू negotiate with other nation. This is a foreign policy, and this plan or documentations or a statement is been made with in the backdrop of national interest. हमारा national interest है to have a security, तो हम वैसा ही प्लान करेंगे. मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं. यस और नो? मिलिट्री प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं हम. इकोनॉमिक एंगेजमेंट एग्रीमेंट ट्रीटी कर रहे हैं हम. We are making an agreement conventions with the other foreign nations bank to make us a strong. You're getting my point, right? And in the coming years, India is going to play a very major role in the world order.
how just in a 2-3 months back, India has become the world most populate nations. जनसंख्या में चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया. And in the coming years, the 60 to 70% of the Indian populations are in the working group. China is known as an aging country. तो हमारे यहाँ वर्किंग कैपिटल होगा. ह्यूमन रिसोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज एन कैपिटल फॉर एनी नेशंस. यस और नो. लेबर अपने होंगे, काम हमें कहीं से लेबर लेकर आना नहीं, हमारे पास वर्किंग फोर्स होगा. तो मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, तो वहां हमसे लोग डील करना चाहेंगे. दैट्स व्हाई मेनी फॉरेन नेशंस कंपनीज हैज एंटर्ड इनटू इंडिया आफ्टर द कोविड. एमजी, अगर आप गाड़ी में बात करें तो किया, एप्पल हैज केम टू इंडिया, right? And after the Apple manufacturing, you will get a cheaper mobile made in India, right? India has also started. See, the COVID has bring one more problem. That is a problem of semiconductor. Every electronic device in the world runs through the semiconductor. आपका जो स्मार्ट वॉच है वो, स्मार्टफोन है वो, even the vehicle, laptop, everything, this AC, they all run on semiconductor. कोविड के दौरान एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस थी, तो चाइना और कोरिया से हम लेकर के हमारे पास सेमीकंडक्टर नहीं आ रहे थे. इसलिए आप उस दौरान अगर उस पीरियड में देखें तो मैन्युफैक्चरिंग और सेल बहुत कम हो रही थी व्हीकल. देयर इज अ ड्रॉप इन द सेल ऑफ व्हीकल्स, मैन्युफैक्चरिंग. So have decided that India will now develop its own semiconductor. So many foreign nations are also coming to India for that. India is going to have its own lithium batteries, which is an important part of the electric vehicles. Getting my point? जब आप साइंस एंड टेक पढ़ेंगे तो आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, लिथियम बैटरी को ही क्यों यूज किया जाता है. Drawbacks of that is a part of the science. Are you getting my point? Clear? So this foreign policies is a policy to interact with the nations. Clear? Now there is another term that is known as a diplomacy. ना अपना diplomats या diplomacy, क्या है ये for diplomacy or any idea? Can you become a diplomat? How? Process? IFS, Indian Foreign Service. See, is there any link between the diplomacy and foreign policy? What is the link? Is the two terms are similar, or there is a difference between them? What is difference? They are, and what are their job? They are representative, okay, yes, but what are their job? To achieve that foreign policy, right? So foreign policy, we have seen, it is a guide, plan, that what we should do and how our relation should be established with other nations. Diplomacy is a way through which this foreign policy can be met. So diplomacy is a means. There is a term, means and end. आपने क्या है means and end का मतलब? End means to achieve the goal. ठीक है, end मतलब हमारा ये गोल है. That is your aim is to become an IAS officer. Means is किस तरीके से आप उसको अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं, राइट? सो एंड इज फॉरेन पॉलिसी इज आवर एंड, हाउ टू इंटरेक्ट विद द नेशंस दैट आवर security, national interest should be secured. Diplomacy
is a means to attain this goal. अब फॉरेन पॉलिसी तो खुद ब खुद तो नहीं हो जाएगा ना, उसके लिए या तो फॉरेन मिनिस्टर जाकर किसी के साथ नेगोशिएट करेंगे, राइट, या सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस नेगोशिएट करेंगे. दैट इज नोन एज डिप्लोमेसी. आर गेटिंग माय पॉइंट, यस और नॉट? समझ रहे हैं? फॉरेन पॉलिसी प्लान है हमारा कि हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे लोगों से जिसमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर हो. डिप्लोमेसी वो तरीका है जिसके थ्रू हम इस एम, जो हमने एम डिसाइड किया है फॉरेन पॉलिसी में, उसे अचीव कर सकते हैं. दैट इज नोन एज अ डिप्लोमेसी. इज दिस क्लियर? नाउ राइट डाउन द differences between this foreign policies and diplomacy. Make a column, one side foreign policy and another side is diplomacy. ठीक है, समझ में आ रहा है? Write down the another foreign policy. It is a guide to relation of one state with the other state. It is a guide to relation of one state with the other state. Right on the first point in diplomacy. Its aim is to achieve, its aim is to achieve foreign policy objectives. Its aim is to achieve foreign policy objectives. Clear? Write down the point under national foreign policy. It is used by a state. It is used by a state to achieve its national interest. Okay. Next point under foreign policy. Foreign policy, next point. Its aim to expand foreign policy, next point. आप डिप्लोमेसी में लिख रहे हैं, मैं कह रहा हूं फॉरेन पॉलिसी, नेक्स्ट पॉइंट. Its aim to expand the strategic space. Strategic space available within the country. Within a country. हाँ, जो अवेलेबल स्पेस है, स्पेस को एक्सपैंड करना है, जितनी कैपेसिटी है. देखिए हमने डिस्कस किया था व्हेन वी हैव स्टार्टेड दैट एन इंडिविजुअल कैपेसिटी और ए नेशन कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू दैट कैपेसिटी अ नेशन कैन नेगोशिएट विद द अदर नेशन. नहीं, अगर कोई अंडर डेवलप्ड है तो उसके नेगोशिएटिंग पावर कितनी है, कितनी नहीं है. So this point says that a foreign policy helps to expand that capabilities of capacity of a nation. Right. The next point under the foreign policy, it is a weapon. Okay. Now write down the under diplomacy. The second point, next point under diplomacy, the instrument used to achieve. The instrument used to achieve foreign policy objectives are now what are the mechanisms through which a foreign policy can be achieved? Through dialogues. The first is dialogue.
dialogue, negotiating treaty, negotiating treaties. Next, influencing the opinion of the people. These are the instruments through which a foreign policy objective can be achieved. The opinion of the people. Clear? Okay. Now in the foreign policy you have written that it is a weapon. So diplomacy is a delivery system. Diplomacy is a delivery system which delivered. Right? The next point, it is a delivery system. Clear? So this is the diplomacy and foreign policy. Any confusion? Delivery system समझ रहे हैं ना? जो फॉरेन पॉलिसी ने डिसाइड किया कि हमें ऐसा करना है, उसको डिलीवर्ड कौन कर रही है? डिप्लोमेसी कर। ठीक है। नाउ राइट ऑन डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। It is a course of action and inputs it is a course of action and inputs that a nation makes in order to repeat say that a nation makes in order to influence behavior of other states and to pursue its goal of national interest. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, it is a set of principles, decisions, and means which a nation adopts to secure its goals in international relations. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा, तो बाय दिस डिफरेंशिएशन जो हमने देखा फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी, तो इट इज नॉट नीड टू एक्सप्लेन दैट द डिप्लोमेसी इज अ पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। डिप्लोमेसी जो फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है, डिप्लोमेसी इज नॉट एलिनिएटेड फ्रॉम द फॉरेन पॉलिसी, नहीं, इट इज वन ऑफ द टूल्स or a way or means through which a foreign policy a nation can achieve its goal. No, diplomacy is the way through which a foreign policy can win, and under diplomacy there are dialogue through which how the diplomacy can work is through dialogue. First it can make engage in the dialogue with other nations, then making treaties, right, and then negotiating, changing opinion of the people, of their nations, of the public. These are the tools through which diplomacy work. Diplomacy is a means through which a foreign policy can be achieved. Okay, so it is a, you can say that it is somehow connected to the foreign policy. If there is no foreign policy of any nations, so there would be no diplomat of the nations. अगर उनका कोई foreign policy ही नहीं है, it means they do not want to
इंटरेक्ट विद द अदर नेशन, किसी के साथ वो संबंध रखना नहीं चाहते हैं, तो उनका वहां पर रिप्रेजेंटेटिव होगा ही नहीं, डिप्लोमेट्स होगा ही नहीं. तो एग्जिस्टेंस ऑफ डिप्लोमेसी इंडिकेट्स द नेशंस हैव अ फॉरेन पॉलिसी. इसलिए आप देखिए बहुत जगह, अब मैं आपको बताऊं, अब एक एग्जांपल देखिए. अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, तो बहुत सारे कंट्रीज ने अपना वहां से डिप्लोमेट्स बुला लिए. यस और नो? हुआ ना सब, बहुत सारे नेशंस ने अपने डिप्लोमेट्स बुला लिए. इट शोज दे डू नॉट वांट टू कीप रिलेशंस विद द अफगानिस्तान टिल देयर इज एन रूल ऑफ तालिबान. बट नाउ दे आर स्टार्टिंग अगेन टू बिल्डिंग द. सिमिलरली जब रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया तब डिप्लोमेट्स को बुलाए गए. जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन होता है, डिप्लोमेट्स बुला लिए जाते हैं कि हमने आपसे अभी फिलहाल फॉरेन रिलेशंस कट ऑफ कर दिया है, आपके साथ रिलेशंस नहीं रखना. तो डिप्लोमेट्स आर अ मीन्स टू कीप अ रिलेशंस बिटवीन. इट शोज दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द टू नेशंस. And the diplomats are a part of diplomacy. Diplomats are not only, or they are only, but they are part of the diplomacy. Negotiating. अब जैसे मान लीजिए अभी प्राइम मिनिस्टर हैज in the current he has arrived to the USA. There will be many deal will be signed. So prime minister has initiated the process of dialogue. Now there will be a dialogue between the two parties. अब यूनिवर्सिटीज और यूनिवर्सिटीज के बीच में अगर कोलैबोरेशन हो रही है तो डायलॉग्स होगी, फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो दोनों फाइनल होगा उस पर ट्रीटी पे नेगोशिएशन होगी. एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशन. यस और नो? यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? चलिए, so you have written the last goals of international relations, right? Next point. Foreign policy implies formulations and implementation of a group of principles which shapes the behavior pattern of a state while negotiating with other states to protect its own interest. Clear? Next point. Foreign policy is a strategy devised by government to its action. Foreign policy is a strategy devised, D-E-V-I-S-E-D, devised by government to its action in the international field. D-E-V-I-S-E-D, device means, device का मतलब क्या हो गया? Develop. Devised by government to its action in the international field. ठीक है? Next point. It involves the process of creating
the process of creating, comma, making and implementing decisions. ठीक है, clear? Next point. The foreign policy of a nation includes first, a set of principles, policies, policies and decisions adopted and followed by nation globally. Adopted and followed by nations globally. Next, second, objectives and goals of a national interest. Objectives and goals of a national interest. Okay. आपने वो लिखा है ना, that what are the objectives of national interest, goals. Second is objectives and goals of national interest. Third, for conducting international relations, broad principles. Conducting international relations, broad principles and decisions. ठीक है, अच्छा, which article of the Indian Constitution deal with the India relations with international? ऐसा कोई आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो इंटरनेशनल रिलेशंस को एस्टैब्लिश करने के लिए बात कहती है? तो नो. Let me give you a hint. It is from the part 4th of the Constitution. Part 4th of the Constitution is known as Directive Principle of State Policy. Right? Article 51 deals with the international. क्वालिटी नहीं हुई, ठीक है. थर्ड, वी आर राइटिंग द थर्ड पॉइंट. अच्छा, थर्ड वी हैव रिटन ना. फोर्थ, assessment of achievements and losses. Yes, Rahul, so you are right, but it is DPSP, not DPDP. Article 51. Good. Assessment of achievements and losses of the nation in terms of its goals of national interest. Interest. Next, means or nature of action, means or nature of action
to be taken to achieve the goals of national interest. Yeah. And the last point, policies, decisions, and action programs, policies, decisions, and action programs for maintaining continuity or changes in international relations, ठीक है? इज इट क्लियर? जी बताइए. बोर्ड पर क्या लिखा है? आ रहा है. नाउ वी आर मूविंग टू दैट पॉइंट. अभी तक में कोई इश्यू है तो नाउ वी आर कमिंग टू दैट पॉइंट. नाउ वी हैव सीन व्हाट इज फॉरेन पॉलिसीज एंड डिप्लोमेसी. ठीक है, अब हम देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स क्या, मींस फॉरेन पॉलिसी कैसे अफेक्ट होती है, फैक्टर्स क्या क्या है फॉरेन पॉलिसी पे डिसाइड करना. हमने भी क्या देखा, हाउ अ नेशंस विल मेक ए पॉलिसीज, अ गाइड टू interact with the other nation. But what are the factors through which it's a nation's policy is impacted or affected, we can say that. कैसे फॉरेन पॉलिसी नेशंस की पॉलिसीज जो है वो इम्पैक्ट हो रही है, अफेक्ट हो रही है, रीजंस क्या क्या है, उसका डिटर्मिनेंट्स क्या है. तो नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी थ्रू विच anyone's nation's interest will be affected, right? So there are three types of determinants if we see the foreign policy. The first is internal factor. Second is external factor. And the third is policy making body. So these are the determinants or factors, we can say that. ठीक है, policy making bodies और policy making factors कर लेते हैं. So we'll discuss each of these separately. ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स, व्हाट आर द इंटरनल फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइंस एनी नेशंस फॉरेन पॉलिसी. The first being the geographical. Okay. So let's discuss the internal factors of any foreign policy. Okay. So determinant, we are discussing determinants of a foreign policy, factors which affecting the policies of a nations while interacting with the other nation. Okay. The first among the internal factor is geographical factor. Is it clear? Now geographical factor means location of the country, size of the country, geography of the country, sorry, populations of the country, then natural resources of the country, climatology of the country, how the climate, topography of the country. So these are the geographical factors through which it has been decided. Population of country. If it is a vast populated country, it will be a huge market for the, and huge, it will generate a huge demand. Human resource, it will have an effect of human resource.
location of a nations, location of a country, whether it is situated in the northern. अब मान लीजिए कोई नॉर्दर्न पोल पर कोई कंट्री है, वहां एसी तो नहीं बिकेगी, कूलर नहीं बिकेगा, कूलर का मार्केट नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होगी, हार्श कंडीशंस है, तो उनके पास उनको वो दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू कल्टीवेट मोर क्रॉप्स, बीइंग एन एक्सट्रीम वेदर, trade will be difficult. So location of a country is also one of the factors on which an policies has been decided, right? Now suppose that if any nations situated in Antarctica, so transportations of any goods from a land area to the Antarctica will cost. Yes or no? Getting my point, right? Then size of the nations, whether it is in a small size or a bigger size, whether it can accommodate the or not, right? But size matter less when it comes to the locations. So location of any nations plays a distinct role in spite of size of a nation. जो locate किस एरिया में है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पे तो नहीं है, हार्श कंडीशंस पे नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड में कहीं डिफिकल्टीज तो नहीं, कनेक्टिविटी है या नहीं. आर गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? राइट? लाइक चाइना, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द चाइना इज अ ड्रेन, द ड्रॉट प्रोन एरिया. पूरा आपका वो जो है वो रेगिस्तान है, वो भी जो एरिया है आपका, that is it, right? But it is has a hugely populated in the eastern part. Similarly, आपका Australia is also only the population resides in the eastern part of the Australia. The western part is a deserted area. India located at the way between the tropics. It is surrounded by the land boundaries also and a sea route also. It has a connectivity of airways also. So location wise it is good to have a trade. Now India having a control over the Indian Oceans, so it will be in a positions to negotiate. जैसे आप देखिए, आपको एक एग्जांपल देता हूं, अफ्रीकन नेशंस में पायरेट्स की प्रॉब्लम आ रही है. अफ्रीकन नेशन, नाइजीरिया एंड ऑल, दे आर बीन acting as a pirate because that oceans, the Indian Ocean and Arabian Sea, the both side of the India is a huge potentials of a trade through sea. So they, the pirates over there, are in a position to negotiate with the nation. Hijack कर लेना किसी के shipments को. Getting my point? So location is more important than the size of the nations. Though size is also important, but location is more important, right? Then natural resource. The presence of natural resources in the country. The more natural resources a country will have, it will have a more in a position to negotiate with the nations. Petroleum. Example के लिए आप देख सकते हैं petroleum. It made the West Asian nations to put in a political order. Yes or no? Are you getting my point, right? Then climate. Harsh climate है या moderate climate, it is having a harsh climate or moderate climate. Clear? Which is also known as a topography, rain, winds. अब पता चला कि जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देखिए, वियतनाम वॉर हमने देखा था, राइट? तो वियतनाम वॉर में नॉर्दर्न वियतनाम में स्टेट के पास अमेरिका ने अपना शिप पोजीशंस की थी. वो जो एरिया है वियतनाम और वियतनाम का नॉर्दर्न वियतनाम में जो सी है, दैट इज नोन एज अ वेरी हाई थंडरस्टॉर्म्स एंड विंड्स. The region of very high thunderstorms and winds, and due to that high winds and strong thunderstorms, the shipment of USA was destroyed. But it is considered that northern Vietnam has done that. So the climate, wind, topography of the regions
is also important in deciding the foreign policies. So this is the first factor through which a foreign policy of a nation is affected, or it has been factored. Is it clear? Any doubt? Clear? So this is geography. I will let you write down all this, but let's first understand. Next, second is history and culture. History and culture factors. How history and culture will be a factor in deciding the foreign policy? कैसे हो सकता है? हिस्ट्री कैसे फैक्टर हो सकता है कल्चर डिसाइडिंग फैक्टर? और NAM is a policy of India. NAM is a policy. How NAM is now you are in a track, but you need to understand why NAM has been decided. Why NAM is formulated by India. So history, as a historical, India is against the anti-imperialism, anti-colonialism. Yes or no? India all together, all the years, they have fought for the anti-colonialism and against the anti-imperialism. So this historical part of India plays an important role in deciding the foreign policy, and because of these reasons that they have an against the anti-imperialism or anti-colonialism, वो पूंजीवाद के अगेंस्ट में, वो कॉलोनिज्म के अगेंस्ट में थे, तभी उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम अमेरिका को सपोर्ट करते हैं अपने आफ्टर इंडिपेंडेंस, नॉट वी आर गोइंग टू सपोर्ट द यूएसएसआर. So they have decided the middle path, and because of the historical perspective and cultural perspective, India has always opted for a middle path. There is a saying in a Sanskrit, ati varjate. Extreme of everything is bad. The meaning of ati varjate. Yes, and that middle path, that middle madhyam marg, Panchashil, NAM. NAM is a middle path. Panchashil is a middle path, which is inspired from the Buddhism. Cultural, that is an historical culture, na? Yes or no? We have a history of being a non-violent. That's why we do not use our any weapons. We do not believe in a first use of weapons because of a non-violence. Because of a policy of non-violence, the India never conquered any nations. India never attacked any nations. And that the middle path, ati varjate means extreme of everything is bad. So we always believe in a middle path. And this policy of middle path has influence in our foreign policy. And we have a historical background of being an anti-imperialism, anti-colonialism. That is also played an important role after the independence India has, while deciding its foreign policy, like NAM, non-aligned movement. Yes or no? Panchashil, not interfering in any other nation's internal matter. समझ रहे हैं? Yes or no? ठीक है? So this is how the historical and social cultural perspective factors influence the foreign policies of a nation. किसी भी नेशंस का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग ही उसका फॉरेन पॉलिसी चलेगा. चाइना फॉरेन पॉलिसी, रशियन फॉरेन पॉलिसी, यूएस फॉरेन पॉलिसी. यूएस ऑलवेज बिलीव इन ए कैपिटलिज्म. हिस्टोरिकली दे आर कैपिटलिस्ट. तो उनकी फॉरेन पॉलिसी हमेशा दे विल ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड द कैपिटलिज्म. यस और नो? ठीक है, एनी डाउट?
in this, no, but in that war also we have chosen a middle path. We neither, though we have a friendship with a good relations with Russia, and Ukraine has not supported us in the 1990 war, Kargil war, still we are not with the Russia and we are not against the Ukraine. We have chosen a middle path, that this war should not, the violence should not be committed. And we have appealed them to stop the war, to come on the table, to negotiate. तभी आप देखिए जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी रशियन in 2020 it was happen or 21, right? 20 February and something. It's been almost a year over here, right? 20, 21 that part is this, right? So they have approached the Indian leaders or diplomats to mediations. That's why, because of being following a path of middle, ati varjate, we are avoiding an extremes, we are not in a part of sanctioning Russia. जब यूएसए और यूरोप सैंक्शंस कर रही है रशिया को, तो हमने सैंक्शंस में वोट, वी हैव ड्यूरिंग द वोटिंग वी हैव एब्स्टेन फ्रॉम वोटिंग. We do not vote in the favor or in the sanction or against, but we have abstained. क्योंकि वोट आप फेवर या अगेंस्ट में करें, it means you are inclined to someone's or you are parting to someone's or taking extreme steps. या तो sanction, putting a sanction on an nation is an extreme step, or not making sanction is also an extreme step, but we are taking a middle path. So this policy of a middle path is a very important part of Indian foreign policy, which we follow. When there is a stake, अब उसकी बात आते हैं फिर, जब इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया, सैंक्शंस नहीं किया, तो यूरोप ने इंडिया पर क्लेम एक्विजिशंस लगाया कि दैट यू आर पार्टिंग विद द नेशंस. आपको याद हो जयशंकर के साथ, हमारे ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स जयशंकर साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलिगेशन था यूरोप की तरफ से. तब उन्होंने कहा था कि आप हमसे ज़्यादा पेट्रोलियम ले रहे हो, आप ज़्यादा ये कर रहे हो. हम अपना नेशनल इंटरेस्ट नहीं खो सकते. वी आर बीइंग अ सॉवरेन नेशन. नो वन कैन फोर्स अस टू सरेंडर आवर नेशनल इंटरेस्ट बाय बीइंग अ सोवरेन नेशन. वी आर ए सोवरेन नेशन, तो वी कैन नॉट. आप इसीलिए देखिए, अगर आप ये रिसेंटली एग्जांपल देखें पाकिस्तान का, नाउ दे आर इन एन इकोनॉमिक क्राइसिस. श्रीलंका वाज एन इकोनॉमिक क्राइसिस, so they have surrendered their sovereignty. अब पाकिस्तान को हेल्प तभी होगा आईएमएफ की तरफ से जब वो उनके कंडीशंस को फुलफिल करेंगे. नाउ द टैक्सेस, नाउ द पॉलिसीज इन Pakistan will be not decided by the government or the people of Pakistan, rather it has been decided by the IMF. It means they have lost their national interest. Yes, accordingly that it means they have lost their sovereignty. Yes or no? But when it comes to the sovereignty, we are a sovereign nation, we have a full capacity to negotiate on that matter. Any doubt? Okay, so this is the second. Now if we move to the third, so third is national capacity. The next factor is national capacity. So what is national capacity? National capacity means it includes three things: military progress or strength, economic progress, and technological progress. If we are strong in economic background, economically background, if we are strong, we are not dependent on anyone, we are in a position to negotiate our terms. यहाँ पर मैं आपको दोबारा एग्जांपल श्रीलंका का दूंगा और डेवलपिंग नेशंस का और अंडर डेवलप्ड नेशंस का. तो अंडर डेवलप्ड नेशंस हु आर डिपेंड ऑन द डेवलप्ड नेशंस फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस, they are not in a positions to negotiate with that nations. जो अंडर डेवलप्ड है वो जैसे जिम्बाब्वे, श्रीलंका. नाउ
Sri Lanka being in an economic crunch, they are dependent on others, and because of their economic crisis, they are fall under the debt trap. Because China is helping them. China is making roll out from the economic crisis. Are you getting my point, right? Now, military strength. Military strength does not only includes the army or soldiers, but equipments, defense equipments. Now you can see, you can get an example for this, that during the Kargil War 1999, right? We have the Kargil War. We have requested the USA to give us a GPS satellite to mark the terrain locations, but USA has denied that process. We are not strength, we have to depend. Though we do not lose the war, but we at that point of time we are lacking in the technology also in the military sector. Yes or no? We have developed our own GPS system. हमने अपना GPS systems launch किया ना. It means we are making ourselves military strength. We are procuring. We are still in the process of Swadeshi. In defense sector also, self reliance. हम घर पे ही बना. अभी देखिए हमने shipment विराट, बहुत सारे anti drone missiles we have taken, which has been manufactured in India. It means we are not only strength in a number, but also we are making ourselves strength in the technology, in the military sector by procuring. अभी हमने टेक्नोलॉजी लिया है, S-400 फ्रांस से लिया हमने. Yes or no? Getting my points? So it is making us military strength. हम अब दूसरे को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. Clear? And then a technological process. India is known as a brain drain. Brain drain, do you know the brain drain? यहाँ पर ब्रेन को ट्रेन कीजिए और फॉरेन में जाकर जॉब कीजिए, वहां पर यूज कीजिए. सुंदर पिचाई of is a brain drain. So we are developing a technology. We are in the technology AI. We are developing our AI tools. We have our own. You can say that against the Twitter, that is Coup is a platforms of Twitters, right? We have been advancing in technology. We are developing supercomputer. Yes, it is an Indian app. तो हम टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट है. तो नाउ वी आर इन पोजिशंस टू नेगोशिएट विद द नेशंस इन द टेक्नोलॉजी. इंटरनेशनल सोलर अलायंस आप देखिए. यस और नो? So we are the initiators, and all these will make the national capacity to build a status and make a positions in a negotiations with the other nation. Is this clear? So this is another factors of determinants of a foreign policy. Okay. Next is a public opinion. Next determinant is a public opinion. क्यों नहीं? एग्रीकल्चर क्यों? इकोनॉमिक एनहांसमेंट प्रोग्रेस का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर विद सेल्फ सफिशिएंट. टेक्नोलॉजी से भी तो हम एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं. टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो बीन यूज्ड इन द ड्रोन वेयर यूज्ड टू असेसमेंट. हम क्लाइमेटोलॉजी, अब देखिए, ड्यू टू द टेक्नोलॉजी वी आर इन पोजीशंस टू सेव लॉट्स ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द बिपरजॉय cyclone. So we have saved lots of life. So these are internally also we are getting strong, and this make us an strong, not letting depend on the others.
आप इसको जितना एलोबरेट करके लिख सकते हैं, जिसकी जो जहां पर अब एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी की बात करें तो अब जब हम आंसर का प्रोस्पेक्ट ऐसा होगा तब हम लिख सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में हम सिर्फ इतना ही मेंशन करेंगे कि हाउ नेशनल कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग, वी आर गेटिंग प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का यूज आपके लाइफ में भी है, टेक्नोलॉजी से अफेक्ट स्टूडेंट्स भी हो रहे हैं, यस और नो? ऑनलाइन स्टडीज, delivery system of the government, DBS, DBT. What is DBT? This question has many a times been asked in examination. Direct benefit transfer, jam trinity. तब आप, what is jam trinity? जनधन आधार मोबाइल, linkage of Aadhaar and mobile with the bank account, delivery systems to stop the leakage. तो ये टेक्नोलॉजी का ही असर है, बट इंटरनेशनल फोरम में जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात, तो वी जस्ट नीड टू मेंशन, इतना डिटेल में हम नहीं लिख रहे कि टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ स्ट्रेंथ है, ठीक है? एग्रीकल्चर, ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर में हम, अब मान लीजिए हमारे पास बहुत पैसा खाने को ही नहीं है, हम तो सेल्फ रिलायंस नहीं है ना, फिर तो हमें डिपेंड होना पड़ेगा दूसरों के ऊपर। हम एग्रीकल्चर में भी प्रोडक्शंस में कर रहे हैं काम, बीइंग अ लीडर ऑन दिस, वी आर एक्सपोर्टिंग। ड्यूरिंग कोविड, मैंने आपसे कहा था कि ड्यूरिंग कोविड वी जस्ट नॉट ओनली एक्सपोर्टेड द मेडिसिन टू द वर्ल्ड, बट वी ऑल्सो प्रोवाइडेड अ फूड ग्रेन्स। लीडर्स, इंडिया इज अ लीडर इन प्रोवाइडिंग द, एक्सपोर्टिंग द फूड ग्रेन्स द वर्ल्ड, ठीक है? क्लियर? क्लियर? Next is public opinion. What is public opinion? Opinion of the public, right? So in a democratic country, in a democratic government or a democratic state, it is an important part to play a role in foreign policy. अब public opinion कैसे होगी मैं बता रहा हूं। In the last class we have discussed that treaty should be ratified by the legislature, yes or no? Ratifications of a treaty is required or not? कल देखा था ना हमने, तो ratifications कौन करेगा? लेजिस्लेचर करेगा ना, यानी पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट में कौन? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स, yes or no? It means the resentment of the people will be tackled in the legislatures. So in a democratic government or democratic state, a public opinion is important for any course of actions. So the government, the democratic government cannot ignore the public opinion related to any matter. It can be ignored in an aristocracy. ठीक है, जैसे तालिबान का अगर आप ले लें, वहां पब्लिक ओपिनियन मैटर नहीं करती है, लेकिन इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेटिक नेशंस, पब्लिक ओपिनियन मैटर्स। टू whom we can keep relations, to whom we cannot keep relations, it play an important role, right? आज पाकिस्तान के साथ कुछ हो जाए तो there is a to settle down to resentment of the public opinion, we cut off all the relations with the Pakistan. Yes or no? Transportations fail, everything. Why? Because the public opinion, the public is of the opinion that once we have declared a war with the nations, we should cut off the relations. Why we are still not been continuing with the relations with Pakistan? कोई trade negotiations नहीं चल रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में. Why? With the public is opinion, first they should keep up the policy of terrorism, then only we can decide. The public opinion is one of the important part of an democracy. It is not only related to the foreign policy, but the public opinion of any nations decides the core of actions of democratic government. क्योंकि डेमोक्रेसी में पब्लिक से ही गवर्नमेंट है, पब्लिक की ही गवर्नमेंट है, तो आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. Yes or no? Are you getting the point? Clear? So this is another factor. And next is ideology.
ideological factor. Best example for the ideological factor we have already discussed, that is ideology war between the America and USSR. That's also decide the course of actions, whether you believe in a America believe in capitalism, USSR or Russia believe in communalism, India believe in middle path, and NAM is a product of middle path. India believes that we are not going to align with either of the nations. It means we are not in a support of a capitalism. We are not in a, because capitalism is believed to be a neo-colonialism. पूंजीवाद के थ्रू फिर से गुलाम बनाया जा सकता है. So it is known as a न्यू इंपीरियलिज्म और न्यू कॉलोनिज्म. तो आइडियोलॉजी हमारी क्या है? मिडिल पाथ. वी ऑल्सो बिलीव इन अतिवर्जते. यस और नो? वसुदेव कुटुंबकम. तो हम सबको साथ लेकर चलेंगे, हम किसी एक के साथ नहीं होंगे. तो आइडियोलॉजी इज ऑल्सो पार्ट विच इन्फ्लुएंस the foreign policy of any nations. Yes or no? Is this clear? Next is social and political factor. Social and political factors which influence the foreign policy of a nation, right? Now the political factor means the form of government which existed in any nations will decide the course. If there are any changes in the form of government, then its foreign policy will also change. Yes or no? है ना? जैसे एग्जाम्पल में हम फिर तालिबान लेते हैं. अफगानिस्तान. अफगानिस्तान में बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तालिबान रूल देयर वाज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. So their foreign policy was based on a democratic form of government. But as soon as the government changed over there, their foreign policy was also changed. समझ रहे हैं? तो जिस भी गवर्नमेंट स्टेट में जिस टाइप की गवर्नमेंट होगी, उनका फॉरेन पॉलिसी वैसे ही डिसाइड होगा. और जब भी उस स्टेट में या नेशंस में गवर्नमेंट में चेंजेस आएगा, उनके फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस आएगा. एग्जाम्पल के लिए आप देखिए अमेरिका. अमेरिका हैज अ टू पार्टी नेशंस, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. So whenever there is a government of democratic government come, they are against India. And when there is a Republican government, they are pro-India. Bush is a democratic against India. आपका वो ओबामा डेमोक्रेटिक अगेंस्ट इंडिया. ट्रम्प प्रो इंडिया. तो गवर्नमेंट के नेचर, गवर्नमेंट में जब भी चेंजेस होंगे, whenever there is a change in the government, the foreign policy will always change. अब आप इंडिया की देखिए. बिफोर दिस गवर्नमेंट देयर वाज एन यूपीए गवर्नमेंट, so they have a different foreign policy. As the UPA government changed into the NDA government, the nature of the foreign policy was changed. Now we are being more aggressive in our foreign policy. Yes or no? Are you getting my point or not? See, due to the public opinion, we have the government will change ना. डेमोक्रेटिक रूल की हम बात कर रहे हैं, हम एरिस्टोक्रेटिक की बात कर ही नहीं रहे हैं. जहां पर डेमोक्रेसी है वो तो पब्लिक के थ्रू होगा. अगर पब्लिक ओपिनियन रिसेंटमेंट चेंज हो रही है तो गवर्नमेंट भी चेंज होगा. और गवर्नमेंट तो हमेशा, जहां डेमोक्रेसी है वो गवर्नमेंट तो हमेशा चेंज होती रहेगी. तो जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है, उनके फॉरेन पॉलिसीज के डिटर्मिनेंट्स भी चेंज, फॉरेन पॉलिसी पे अफेक्ट पड़ता है हर गवर्नमेंट के चेंजेस. मैंने आपको एग्जांपल दिया. इंडिया में यूपी और एनडीए गवर्नमेंट का पॉलिसीज देख लीजिए. अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक देख लीजिए. जब भी इनमें चेंजेस होगा, they always some inclined towards Asia, some are inclined
नॉट टुवर्ड्स एशियस। इंडिया का रिलेशन जब भी रिपब्लिकन आई हैव गवर्नमेंट मोस्टली इज अ गुड रिलेशन विद अमेरिका। समझ रहे हैं, राइट? तो दिस इज अ पॉलिटिकल फैक्टर्स। इट मींस एट डेमोक्रेटिक नेशंस it will depend on the political unit, leader, elite of the nations, leadership, elite of the government of the nation, right? It will be depend on the government of the day, right? Now if we talk about the social factors, so if any society is silent, is a believer of a non-violence, its policy will also be in a believer of non-violence. तो जैसा सोसाइटी होगा, पीस सोसाइटी होगी, तो वो उसके फॉरेन पॉलिसीज भी पीसफुल होंगे। जापान एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, दे हैव अबेंडन्ड द थ्योरी ऑफ वॉर, देयर सोसाइटीज आर पीस। So society also plays an important role while deciding the foreign policy. Is this clear? Any doubt? And the last is national interest. And this we have discussed, that the national interest is also the part of the which affect the foreign policies of nations. How to secure its security, progressiveness, right, and status, self growth, right? So these are the internal factors which determines the foreign policy of any nation. ठीक है, पहले हम इसको लिख लेते हैं, then we will start discussing the external and the other factors. ठीक है, चलिए, so write down determinants of foreign policy. समझ में आ रहा है ना? एनी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? So you are enjoying the class? चलिए, good. Determinants of foreign policy. Write down. Foreign policies can be broadly classified into foreign policy. अच्छा, वो आपने नोट कर लिया ना? This ये है ना? There are 3 types. Write down this. Foreign policy broadly classified into 3. Third is policy making factors. Policy making factors. So we'll start directly with the internal factor. ठीक है, give heading internal factors and write down first geography. First internal factor. Now ये 3 determinants हैं. अब each determinants will have a different points. Internal factors. What are the internal factors which affect the foreign policy? The first internal factor is geography. मैंने लिखा ना internal factors. First internal factor is geography. Write down. It is considered to be the most stable determinants which influence foreign policy. It is considered to be the most stable determinants which influences foreign policy of a nation. अब geography में क्या है? We have seen geography means populations of. This you have all noted down ना? लिखने की जरूरत, writing the, I mean what we understand by the geography. Next,
geostrategic location of a state. Next point, geography. Geostrategic location of a state. That is, what does this mean? That is, position of a state relation location of the state, that is, position of a state in relation to other land bodies. Position of a state in relation to other land bodies, comma, and to other states is more important than the size of the state. Is more important than the size of the state during foreign policy formation. ये point clear है ना? How a geostrategic position is more important. Location is more important than the size. Formulations. Next point, under geography, climatic conditions of a state. Next point under geography, climatic conditions of a state is another geographical features that plays a crucial role in the determinations of the state's foreign policy. Determination state's foreign policy. Okay. Next point. Natural resources of a state. Greatly affects the foreign policy decision. Greatly affects foreign policy decision. Full stop. Continue the line. Possessions of natural resources. Possessions of natural resources increases bargaining capacity of a state. Increases bargaining capacity of a state internationally and helps in foreign policy choices. And helps in foreign policy choices. Okay, so this is geography. Next is history and culture. Next factor is culture. Okay, write down. Political tradition of a nation is rooted in its history and culture.
the political tradition of a nation is rooted in its history and culture. Next point, the basic foreign policy objectives is guided. Basic foreign policy objectives is guided considerably by the historical and cultural tradition of a state. Next point, in the realm of external relations, REALM, realm of external relation, a nation follows a course of action which is greatly influenced by the style and culture which the nation adopts from the history. Okay? Imperialism and colonialism adopt from history. Okay. So that's why it believe in that decided the middle path. हमने नाम का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, because India believes in anti-imperialism and anti-colonialism. Okay. That's why they have adopted the middle path. Next is national capacity. National capacity includes military strength, economic development. The first point under the national capacities, it includes military strengths, economic development and technological progress of the. Okay? Next point under the national interest, national capacity. The highly developed countries in terms of economy have the advantages in gaining desired objective. In gaining desired objectives in their relations with economically and technologically weaker countries. ठीक है, तो आर यू इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, वो एग्जाम्पल हमने देखा था, श्रीलंका डेट क्राइसिस, राइट? अंडर डेवलप्ड नेशंस आर नॉट इन ए पोजिशन टू डिसाइड देयर ओन कोर्स ऑफ एक्शन ड्यू टू द लैकिंग इन इकोनॉमिक फैसिलिटीज, राइट? आप एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान भी देख सकते हैं. ठीक है, एनी इशू नहीं? नेक्स्ट इज पब्लिक ओपिनियन.
Next internal factor is public opinion. In a democratic state, the government cannot dare to ignore the importance of public opinion in both domestic and foreign policies. Next point under public opinion, that public opinion in case of foreign policy sets limitations on choices of policies and constraints in policy execution too. TOO. It not only constrain the state from making foreign policy, but it also constrain the state from executing those foreign policy. Okay. Next is ideology. Yeah. Ideology. Okay. Write down. It means a set of beliefs or interrelated ideas of a group of people about power distribution in the society. Comma, history, comma, proper functioning of the government, comma, economies and particular way of life. Group of people about power distribution in society, history, proper functioning of government, economies and particular way of life. Next point. To achieve national interest and justification of policies, many times ideological principles are used by states or group of states. Okay? Here you can write an example like Ati Varjate ideology, which India follows, NAM, or America follows. There was during the Cold War, there is an ideological war between America and USSR. One follows capitalism, another was following the communalism principles of ideology. Okay?
that is how their policies was defined on the basis of ideology, ठीक, and how Indian policy was defined on Indian set of principles, ठीक. Next लिखिए, next point is social and political structure. Write down the formulation of foreign policy of a state. The formulation of foreign policy of a state is influenced to a great extent by the nature of political system, by the nature of political system and ruling elite. Right? So it means, लिखना नहीं है, just what does this mean? It means the foreign policy of a state will differ from the foreign policy of another state depending upon the nature of political systems. Yes or not? A democratic set of states will have a different set of political foreign policy in comparison to authoritarian set of groups, right? So on the basis of political formations, the state will have a different set of foreign policies. Yeah. Next point. When there is a sudden change in government, when there is a sudden change in the government of a state, it leads to change in course of the change in course of foreign policy of the state. 2 foreign policy of the state, 2 TOO. Okay, so here you can quote examples of America also, when Republican changed to Democratic. You can quote an example of India when the NDA has been, rule of UPA has been changed from the NDA government, and you can also quote an Taliban state of government, or in Pakistan when the democratic government was changed into the military rule, their foreign policies also changed. So there are many examples which we can quote in this section. समझ में आ रहा है? Yeah, so you can accommodate with the example whenever it required, which we have already discussed here. Okay? Now next point. Social factors are equally important in the formulation of foreign policy. Social factors are equally important in the formulation of foreign policies. Continue the point. A peaceful, strong society provides for a strong foreign policy than a society with tensions and with unequal distribution of wealth. Write down the next determinant is national interest. The last determinant of this is national interest. National interest.
So it is of a supreme importance. It is of a supreme importance while formulating foreign policy. Full stop. Next point. Behavior of states in international field is guided by the national interest to a great extent. Guided by a national interest to a great extent. Clear? So this is what we have discussed, the first determinant of foreign policy, that is an internal factor. Okay, चलिए, so we'll end the class today. The rest we will discuss in the next class, and in the next class we will also discuss the concept of soft power. Joseph Neil, and how it is important for the India also, and how the India has been playing a role in soft power. What are the limitations and challenges, right? So next class में हम ये भी discuss कर लेंगे, and we will also try to understand the one of the concept is smart power concept, technology driven concept. Okay, continue the next class. Thank you everyone, and hope you all like the class. So now try to be continuing the class, right? Thank you and have a nice day.